Hey there, what's up? Sayyed here. Welcome back to my channel. Today I am unboxing Samsung 250GB SSD and comparing hard disk and SSD और इंस्टॉल करूँगा ऑन माय ओल्ड लैपटॉप Dell which is 7 year old और आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं लैपटॉप में, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। पूरा वीडियो देखिए एंड तक। लेट्स बिगिन। लेट्स टॉक अबाउट हार्ड डिस्क। इन शॉर्ट बोलूँ तो हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक मैकेनिज्म यूज़ होता है डेटा स्टोर होने के लिए इन अ फॉर्म ऑफ 0 and 1। हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट्स होते हैं लाइक प्लेटर्स और हीट जनरेट करता है, साउंड भी आता है। जब भी ऑन करते हैं लैपटॉप इस स्विंग करके साउंड जनरेट करता है और इसकी रीड राइट स्पीड है 80 to 100 Mbps। SSD की बात करते हैं। SSD स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। इट यूजेस इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड असेंबल एज अ मेमोरी टू स्टोर अ डेटा। SSD में क्या होता है, चिप रहता है। नंबर ऑफ चिप यूज़ करके एक 250GB की हार्ड डिस्क बनती है, जो आपको रैम में भी देखने को मिलेंगे, चिप्स रैम में भी देखने को मिलेंगे, पेन ड्राइव में चिप्स, नंबर ऑफ चिप्स मिला के एक हार्ड डिस्क बनता है। जो कि SSD में क्या होता है, SSD में देयर इज़ नो मूविंग पार्ट, हीट भी नहीं होती है, लाइट वेट रहता है। 40 ग्राम की SSD आती है 250GB की। SSD की रीड राइट स्पीड है 400 Mbps से 500 Mbps। आप सोच सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। 80 Mbps हार्ड डिस्क की है, 80 Mbps to 100 Mbps हार्ड डिस्क की है और SSD की है 400 Mbps to 500 Mbps। सोच सकते हैं आपको कितना डिफरेंस मिलेगा। और हार्ड डिस्क से ज़्यादा 4 गुना स्पीड है SSD। हार्ड डिस्क से ज़्यादा बूस्ट करता है बूट टाइम और वीडियो एडिटिंग करते हैं तो रेंडरिंग स्पीड होगी और एप्लीकेशन ओपन फास्ट होएगा और लैपटॉप एकदम स्मूथ चलेगा। बट इट इज़ एक्सपेंसिव देन द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी 1 TB की हार्ड डिस्क 3500 में। SSD 250GB की SSD 4499 रुपीज़ का SSD मिल जाएगी आपको। आप सोच सकते हैं कि कितना डिफरेंस है हार्ड डिस्क और SSD में, प्राइसिंग में भी। हार्ड डिस्क की प्राइस, SSD की प्राइस भी ज़्यादा है मगर एक्सपेंसिव है, मगर इसकी फ़ायदे भी ज़्यादा है ना, जो कि आपको पहले भी बताया चुका हूँ मैं। बूट टाइम स्पीड कर देगा, वीडियो एडिटिंग आप करते हैं तो रेंडरिंग स्पीड ज़्यादा करेगा, एप्लीकेशन ओपन एंड फास्ट कर देगा। अभी आप प्रोसेसर और रैम अपग्रेड किया तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा, जबकि SSD अपग्रेड करेंगे आप नॉर्मल लैपटॉप में हार्ड डिस्क से SSD में अपग्रेड करेंगे तो बहुत डिफरेंस आएगा। तो लेट्स अनबॉक्स द SSD। लेट्स टेक द कैमरा टू द नेक्स्ट डायरेक्शन। ब्रॉट फ्रॉम फ्लिपकार्ट एट 4399 during sale, during big billion sale. Let's unbox the device. I already unboxed it. Let's take the out of the box. It comes with 5-year warranty. The Samsung solid state drive 860 model is 860 Evo. It is a NAND gate. Let's open out of the box. It comes with 4399, which you go download them. I will show you after some time. The SSD look like this, 250GB SATA connectors. Let's do the laptop installation. This is my laptop. I will be installing on this laptop. Let's begin. First of all, you need to remove battery. Let's remove the battery first. After, you need to start screwdriver. आप पूरा स्क्रूड्राइवर से खोल लो। आप यहाँ के बॉटम के कितने स्क्रू है ना, बॉटम पैड के कितने स्क्रू है पूरा खोल लो। आपको सब स्क्रू निकालना है और घुमाना है, लैपटॉप को चेक करना है कोई स्क्रू बचा है क्या नहीं। चेक करके आपको इधर से STD निकाल के, ये भी ये देखो स्क्रू इधर एक है, उसको निकालना है। निकाल के इसको ये यूज़ करेंगे हम। इसको यूज़ करके
CD रोम को यहाँ पे ऐसे पुश है ना, ये पे यहीं पे ऐसा पुश कर देंगे, ऐसा CD रोम आ जाएगा बाहर। यहाँ पे CD रोम आ गया, ऐसा साइड पे रखे और बाद में आप लैपटॉप को घुमा लो। घुमा लोने के बाद घुमा लो और ऐसे कीबोर्ड खोल लो। पहला इधर देखो होम बटन पे एक ऐसा एक एरो मार्क रहेगा, फोकस। इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक।
and